Assalamualaikum everyone. I hope all you are fine. So this is basically the lecture series of a spatial theory of relativity, which is actually the basis of the course that called modern physics. That has course number in your lecture university is 402. Okay, so title is basically modern physics. You can see that modern physics. So modern physics की जो basis है basically वो special theory of relativity के ऊपर. और ये special theory of relativity उसकी foundation development होगी in 1906 by Einstein, and we will have a talk on this कि 1906 में मतलब किस तरह से इसने जो कि एक आइडिया चल रहा आ रहा था at the time of Lorentzian, ठीक है, किस तरह से आइंस्टाइन ने 1906 के अंदर उस आइडिया को पुट फॉरवर्ड किया और कुछ पोस्टुलेट्स के साथ उसने उस आइडिया को that means के come into action, उसने इसको फुलफिल किया. तो we will gonna talk on that कि कैसे लॉरेंजियन ने उस आइडिया को पहले किया था. That was not worked, but though his idea and his transformation was right at that time, Lorentzian transformation की बात करें, फिर हम वो देखेंगे इसके लिए. तो special theory of relativity, let's move into special theory of relativity. And what is this? Okay, syllabus content, because ये एक academic course है, तो हम इसका थोड़ा सा syllabus layout देख लेते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या सीखने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. So relativity 1 इसके अंदर है और relativity 2 इसके अंदर है, ठीक है. So relativity 1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? relativity 1 में हम देखेंगे कि relative motion क्या चीज़ है और फिर frame of reference. तो पहले that means कि we are here at introduction. So this video is actually based on very much on the introduction of this course. Later on we will have talk on frame of reference. So frame of reference के ऊपर हम इसके बाद वाली वीडियो में बात करने वाले हैं और फिर relative motion के ऊपर बात करने वाले हैं. So what is actually frame of reference all about और types of that frame of reference. So फिर हम इसकी types के ऊपर देखेंगे और फिर देखेंगे कुछ examples वगैरह. तो इसकी examples से फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे. And why it is necessary to be have the idea of such frame of reference, and why do we go deep into the frame of reference, or the type of that such frame of reference, because the special relativity would lie on such frame of reference that we will gonna talk in the types. ठीक है. So special relativity उसी के ऊपर बेस करेंगे जो हम टाइप में बात करेंगे, ठीक है. So relative motion in one dimension and relative motion in two dimensions. So relative motion is basically based on the relative velocities. So relative velocity. So ये part जो है मैंने basically in one dimension और two dimension ये part basically बहुत ही small है आपकी books में या टेक्निकल की बुक के अंदर और यूनिवर्सिटी फिजिक्स में और some other books like Handel or some other. तो उसके अंदर बहुत ही small part है. तो ये part थोड़ा सा मैंने इसको elaborate किया है और मैंने इसको एड मैथ्स की बुक से लिया है, additional maths from O levels, ठीक है. So you don't need to be worried yet. additional maths O levels से मैंने लिया है, तो उसके notes जो है वो बस आसे फर्दर आपको दे दूँगा. अच्छा, next इसमें क्या है? experimental basis of relativity. So actually it is a starting point of the relativity in which the failure of it is basically the starting point of the relativity in which the failure of some medium what gives a result, ठीक है. So what gives a result, and that reveals basically new regime of thinking, new regime of intuitions. तो फिर हम इसको देखेंगे मेटल से मोल्ड के अंदर किस तरह का फेलियर उनको एक्सपीरियंस करना पड़ा और वो फेलियर उनको बेसिकली क्या रिजल्ट उसने प्रोवाइड किया
और इसमें इस तरह की इंट्यूशंस ऐड करनी, दैट मीन्स कि हमारी लाइफ के अंदर और मजीद क्या क्या हम सोच पाए, ठीक है, क्या क्या इंट्यूशंस ऐड हो गई हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। देन Einstein postulates that is basically the starting point of this special theory of relativity, or Lorentzian transformation that I have talked on this कि अच्छा हाँ, इससे पहले जो है हम रेफरेंस फ्रेम के साथ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी हम देखेंगे। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हम देखेंगे गैलीलियन जीटी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज रियली वेरी सिंपल, वो आपको बुक्स में मिल जाएगी। और फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द गैलीलियन एंड लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशनलिटी, और इसी को बेसिकली हम एक और न्यू टेक्निक के साथ जो कि मोस्टली आपकी बुक्स वगैरह में यूज नहीं होती है, उसको हम यूज करेंगे। दैट इज बेसिकली द स्पेस टाइम। Space time, it is not just space time access, but it is space time diagrams as well. So फिर इसको space time diagrams के अंदर हम देखेंगे कि हमने किस तरह से इसको space time diagrams के अंदर हम देखेंगे। So I didn't remember कि इसकी वो भी recording है। लेटर ऑन हम देखेंगे डॉपलर इफेक्ट में ये किस तरीके से आगे, दैट मीन्स कि डॉपलर इफेक्ट हमने साउंड के बारे में देखा था, अब हम लाइट के बारे में देखेंगे। तो अगर कोई लाइट जो है वो किसी मीडियम के अंदर अगर वैक्यूम के अंदर या स्पेस के अंदर कहीं मूव कर देगा तो वो किस तरह से सिग्नल जनरेट कर सकती है, दैट मीन्स कि ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट हमें क्या बताएगा वो, ठीक है। सो फिर हम ये देखेंगे the twin paradox and the other surprises. The surprises here means it is not surprises like here is these surprises are basically based on intuitions. Okay. So intuitions that means some sort of imagination that you have made firstly, or it is actually comes into your mind from the imaginary world. Okay. That could be based on such reality, ठीक है, बट जरूर नहीं कि वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव भी हो या नहीं। तो ट्विन पैराडॉक्स इज समथिंग लाइक दैट, बेस्ड ऑन ट्रू लॉजिक्स, ठीक है, ट्रू इंट्यूशंस, बट इट इज नॉट एक्चुअली प्रूव्ड बाय सच मींस, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटली कोई अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। द केस ऑफ आइडेंटिकली एक्सेलरेटेड ट्विन्स और सुपरल्यूमिनल स्पीड। सो फिर हम इसको ये देखेंगे। यूजुअली ये जो मैंने कॉन्टेंट्स लिए हैं, अगर इसके अलावा भी कुछ होंगे तो फिर हम वो भी देखेंगे, बट ये जो है वो टेक्लर्स की बुक में है, ठीक है। रिलेटिविटी 2 में हम देखेंगे बेसिकली रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड सम सॉर्ट ऑफ पैराडॉक्स यू कैन से और सरप्राइजेस, ठीक है। एंड लेटर ऑन mass energy conservation, that is basically E is equals to mc square or invariant mass. What masses would remains invariant and वो change नहीं होते हैं when actually it moves when it moves with the speed of light, ठीक है, or as compared with the speed of light। तो फिर हम उसके बारे में देखेंगे, जनरल रिलेटिविटी को थोड़ा सा टचअप करेंगे और फिर हम मॉडर्न फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। सो अब तक ये था इंट्रो। सो अब थोड़ा सा इसमें मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और कोर्स के अंदर देखते हैं चीज़ें। ओके, सो जनरल रिलेटिविटी को मोस्टली एकेडमिक लिहाज से बहुत ही लाइटर वे में पढ़ाया जाता है, स्पेशल रिलेटिविटी आप टॉकिंग अबाउट, बहुत ही लाइटर वे में पढ़ाया जाता है, सो दैट द इम्पैक्ट ऑफ दिस जनरल रिलेटिविटी would be on a lighter note taken by student भी फॉर ग्रांट इसको लेते हैं, मतलब ये ऐसे ही होता होगा और समथिंग लाइक दैट। सो मैंने कोशिश ही करी कि मैं एकेडमिक प्लस इसके अंदर कुछ नॉन एकेडमिक, दैट मीन्स कि सम सॉर्ट ऑफ स्पेस टाइम ग्राफ्स इंट्रोड्यूस करूँ, सो दैट इट विल हेल्प यू और योर इंट्यूशंस, योर इमेजिनेशंस इनटू अकाउंट, और आप जो है वो इससे ज़्यादा लर्न करें, ठीक है। सो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि स्पेस टाइम ग्राफ होगी, यानी टाइम बाई टाइम इसके अंदर इंक्लूड करूँ, सो दैट यू हैव सम मोर आइडिया फॉर इट, ठीक है। नॉट ओनली दिस, वी विल सी simulations on various experiments in spatial theory of relativity. So spatial theory of relativity
on one point of view is basically the foundation or a key foundation of the modern physics. Okay, motion at constant velocity is a special case of motion. Okay, one thing is that we have types of motion. Types of motion. ठीक है, तो जब भी अगर हम इसकी बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की, सो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट विद acceleration that is actually equals to 0 and acceleration that is not equals to 0. That means either a body is not accelerating anymore, or either a body is accelerating or decelerating, or would have acceleration other than 0. Okay, so we have two such type of case. So the one special case in which acceleration is 0, that have velocity is equals to 0. And in this case, the velocity is actually varying. One can say v1 could be greater than v2, that is a deceleration. v2 could be greater than v1, that is basically an acceleration. So we have two sort of these motion. Okay. So the first case is basically the spatial one. And why we call it a spatial one? Because it's a special case, because it is not experienced in everyday life. Okay. For example, we would always in a such second type of motion. ठीक है, हम हमेशा से रेस्ट में नहीं होते हैं, हमेशा से completely जो है वो it's a kind of exceptional case. ठीक है, हमेशा completely हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी के अंदर जाते हैं, और तो या तो ये जीरो वेलोसिटी है या फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है. ठीक है, so these type of motion is basically exceptional case, and exceptional in a sense कि हम इसको zero acceleration पे ही experience कर सकते हैं, either zero velocity or constant velocity. So that is why it is called special theory of relativity. Okay, next हम देखते हैं आगे some background of SR. What is actually SR, special relativity, is based on? In the book of natural, what is basically the old idea before the special relativity? In the book of natural philosophy, explanation is used from assumption rather than experimentation. So mostly उनके दरमियान जो explanation है वो assumption पे based होती थी, not on experiment. So ज़्यादा experiment के ऊपर believe नहीं करते थे, मतलब before Newtonian one can say. So फिर अल-हातिम आता है. अल-हातिम जो है फिर वो कोई फाउंडेशन रखता है थ्योरी की. ठीक है, और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सबको बताता है, बट कोई बिलीव नहीं करता है. फिर आफ्टरवर्ड्स गैलीलियो ये जो है एक और साइंटिस्ट है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फिर आप देखेंगे. फिर ये आता है और फिर ये अपनी फाउंडेशंस बताता है, और फिर ये कहता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है that is basically proved all the laws. ठीक है, but these laws were not generalized or formalized. So उसको फॉर्मल आके कौन करता है? आपके न्यूटन भैया. ठीक है, सो न्यूटन भैया उसको एक जर्नलाइज मैकेनिक्स के अंदर इसको आगे इसका एक फॉर्मुलाइज्म बनाते हैं. सो फॉर एग्जांपल, मतलब इनसे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटोनियन थिंकर्स या प्री अल-हातिम thinkers were thought that every object would have its natural place. ठीक है, so या तो कोई सब्सटेंस होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो वो हर ऑब्जेक्ट, हर सब्सटेंस अपनी कोई ना कोई नेचुरल प्लेस रखता है. ठीक है, अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए तो वो अपनी नेचुरल प्लेस में वापस चला जाएगा. सो मोशन इन द यूनिवर्स इज बेसिकली ट्राइंग टू रीच इट्स नेचुरल प्लेस. फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ को छोड़ा जाए तो वो अपनी नेचुरल प्लेस में वापस चला जाएगा, किसी चीज़ को ऊपर से धकेला जाए तो वो नेचुरल प्लेस में वापस चला जाएगा. तो इस तरह से वो लोग अपनी assumption को आगे प्रोसीड करते थे. तो एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी था कि टाइम वाज गिवन अ सिमिलर एब्सोल्यूट मीनिंग. ठीक है, यानी हम ये कहते थे कि अगर कि टाइम भी जो है बेसिकली एक तरह से एब्सोल्यूट मीनिंग में ही मूव कर रहा है. ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज द टाइम. ठीक है, बाय मीन्स ऑफ
बाय एनी मीन्स, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हो, दैट मीन्स के पास्ट से चला रहा है, ठीक है, एंड इट इज एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द एंड गोल which is actually future, और that means कि creation of universe से चल रहा है और future में जा रहा है, that means कि destruction of the universe, तो ये जैसा है वैसे ही flow और same flow में चलता चला जाएगा, that means कि every moment you're ticking second by second, second by second, second by second, every moment is actually doing the same thing, ठीक है, either you are at rest by means of space, or either यही आप स्पेस के लिहाज से अगर मूवमेंट में तभी, या फिर अगर रेस्ट में तभी, बिल्कुल सेम चले जा रहा है, और अजल से चल रहा है और अबद तक चलता रहेगा, ठीक है, अजल से अबद तक। सो अगर टाइम भी उनकी एक्सेप्शनल वो जो अजम्पशन में देखा जाए, तो दैट्स टाइम भी जो है वो नेचुरल प्लेस में ही अपनी एंड अप करेगा, ठीक है। सो उनका एक ये बहुत एक अजीब सा आइडिया था। सो अच्छा, उससे पहले ये भी समझा जाता था कि laws of physics discovered, that means ये भी समझा जाता था कि Earth is at center, ठीक है, and all the sun and moon is actually revolving around it, moon and the sun is actually revolving around it, so Earth, okay, or sun, they are actually revolving around it, so that means it's Earth is actually a center of the universe. तो then फिर जब कुछ साइंटिस्ट है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, तो आई थिंक प्रोटोनिकस आई थिंक, तो जब उसने मतलब उसके मरने के बाद जब उसकी डिस्कवरीज को देखा गया, तो उसने बताया कि नहीं, एवरीथिंग इज एक्चुअली मूविंग relative to each other, and as well Earth is actually moving relative, ठीक है, and he said the sun is at epicenter, not the Earth of the solar system, यानी सन जो है वो, और लेटर ऑन के फिर वो सन के बारे में भी ये बताया गया कि सन इज आल्सो मूविंग रिलेटिव टू सम अदर स्पेस, ओके। सो जब उसने ये लॉज ड्राइव कर दिए, सो वी हैव द आइडिया कि जो भी अल्हातेन के या फिर न्यूटोनियन थिंकर्स या फिर जो भी थे, जितने भी लॉज उस वक्त डेवलप हो चुके थे, सो ऑल दैट लॉज दैट डिस्कवर्ड ऑन अर्थ विल अप्लाई इक्वली वेल टू एनी पॉइंट टेकन एज अ सेंटर। दैट मीन्स कि जितने भी लॉज अर्थ को एज अ सेंटर में रखकर बनाए गए थे, ठीक है, वो सारे के सारे इनवेरिएंट रहेंगे कि अगर अर्थ जो है वो सेंटर में ना भी हो तब भी, ठीक है, यानी अर्थ जो है वो सन के रेस्पेक्ट से मूव कर भी नहीं, तब भी वो सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे। दैट इज द सेम क्वेश्चन would be obtained regardless of the origin of the coordinate। That means कि जितनी भी क्वेश्चंस आपके पास हैं, F is equals to m, first law, second law, first law, F net force is equals to 0, और third law reaction has equal reaction, और जितने भी कंजर्वेटिव लॉज जो अब तक आप बना चुके हैं, so regardless of the origin of the coordinates, कैसे भी उसके कोऑर्डिनेट रहे हो, चाहे वो at the center of the universe हो या फिर revolving around the sun हो, जितने भी उसके कोऑर्डिनेट रहे हो, ये सब के सब उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। दैट मींस कि इससे रिगार्डलेस नहीं कहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को सपोज किया जाता है, ठीक है। सो दिस इनवेरियंस ऑफ द इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस द लॉज ऑफ फिजिक्स इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म रिलेटिविटी, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिलेटिवली और कोई भी कोऑर्डिनेट या ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करता हूँ, सो समथिंग वुड बी रिमेन सेम in one coordinate system to the other coordinate system. That means कि invariance. So ये यहाँ से invariance का एक idea हमें वहाँ से मिला. Plus most of the relative frames may be equivalent. What does it mean? It means that कि कुछ relative frames may be equivalent. That means कि अगर आप हैं और आपके दोस्त हैं, that means you, your friend, if you both are not moving, so आपका जो relative frame है gives you an equivalent idea of all laws of physics, all equations of physics, ठीक है, regardless of your origin point, ठीक है। या फिर अगर आपकी जो friend है वो move कर रहे हो velocity v, ठीक है, और with constant velocity, remember that we are actually only talking about the first case in which acceleration is 0, okay, so maybe equivalent or maybe not। सो मेबी नॉट वाली सिचुएशन कहाँ रहेगी जब एक रिलेटिव फ्रेम और दूसरा रिलेटिव फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा हो, तो फिर उस केस में जो है वो इनवेरिएंस वाली सिचुएशन ऑफ हो जाएगी,
यानी ये लॉज ऑफ फिजिक्स जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो काबिल कबूल होंगे और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। There is no special or favored frame relative to which absolute measurement of space and time could be made. यानी ऐसा कोई भी favored relative या absolute measurement of space नहीं है. That means all the frame of reference are relative to some other. For example, अगर कोई observer ground के ऊपर खड़ा है तो उसका relative to ground के रेस्पेक्ट से, कोई अगर स्पेस के अंदर मौजूद है तो उसका स्पेस के रेस्पेक्ट से. So we will have talk in the later session कि inertial क्या होते हैं और नॉन इनर्शियल क्या होते हैं. सो अभी के लिए समझ रहे हैं कि relative frames either they are inertial or maybe non-inertial. They may be equivalent or maybe not. That means they what does it equivalent mean here? Equivalent means कि उनका जो सारी फिजिक्स है बेसिकली वो सारे लॉज जो है वो बेसिकली इनवेरियंस रहेंगे दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. either both are moving with zero velocity, that means at rest, or moving with velocity v. नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है, ओके, नेक्स्ट अबाउट स्पेशल रिलेटिविटी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल रिलेटिविटी. Special relativity is basically a theory that transforms our intuition or understanding of space and time and their interaction, and matter, energy and their interaction. Space and time, so पहले भी हम space and time स्टडी करते थे, और बट अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि पहले हम स्पेस एंड टाइम को इंडिपेंडेंट समझते थे, ठीक है. सो आइंस्टाइन ने कहा नहीं, स्पेस एंड टाइम आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट. दैट मींस देयर मे अकर देयर इंटरेक्शंस एज वेल. फॉर एग्जांपल, अगर आप रेस्ट के अंदर हैं कहीं पर, दैट मींस आपकी वेलोसिटी जीरो है, सो यू आर एक्चुअली मूविंग विद टाइम, ठीक है. सो योर क्लॉक्स आर एक्चुअली टिकिंग in the same order, ठीक है. But if you are at rest and your friend is actually moving, so here is your friend which is actually moving like this, so moving with velocity v, so it is actually moving with time since time is passing, as well as it is moving in space as well. So it is moving in space, it is moving in time. So if the person is moving in space and moving in time, so their time is actually changing, not taking as a time that is actually at rest. That is the person that you are at rest. यानी आपका टाइम जो है वो 1 सेकेंड ही होगा, बट इसका जो टाइम है 1 सेकेंड, that is actually ticking slower than yours. यानी इसकी जो घड़ी है वो ticking slower, ठीक है. So फिर इसकी इंटरेक्शन हम देखेंगे स्पेशल रिलेटिविटी के. मैटर एंड एनर्जी, दैट मींस हाउ डज मैटर इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू मैटर. तो उसकी बहुत जबरदस्त एग्जांपल है हमारे पास फिशन रिएक्शंस में बेसिकली मैटर इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी. और अगर हम एनाइलेशन एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे इसमें मॉडर्न फिजिक्स में, एनाइलेशन में क्या होता है, व्हेन टू such photons are annihilate of particular energy, they would off into two matter particles, that is antiparticles and simple particle that is basically called electron and positron, ठीक है. So कुछ देर के लिए बनते हैं, but they are actually formed by means of energy. So that means कि यहाँ ये दोनों interaction की examples हैं, और they are actually dealing with a simple equation P is equals to mc squared. So the essence of the theory is that clocks in motions takes off time at slower rate. So this is the one thing. यानी जो भी clocks, likewise I have just given you example. So ये जो बंदा है इसके पास जो अपनी clock है वो takes off at slower rate. यानी ये इसको नहीं लगेगा कि ये slower rate के ऊपर takes off कर रही है, बल्कि आपको लगेगा क्योंकि you are at rest. तो आप कहेंगे no, you have the clock that is actually ticking at slower rate and I have a clock that is actually working at right, ठीक है, working right properly. So object in motion are contracted along the direction of motion. So जो भी object, for example इसके हाथ में अगर एक स्केल है, let's say कि इसके हाथ में कोई स्केल है, तो अगर इसके हाथ में कोई स्केल है और ये इस थ्रू स्पेस और टाइम में मूव कर रहा है, so in the direction in which it is actually moving, so इसके अंदर फिर वो contract करेगा
जो भी स्केल, ठीक है, सो सिर्फ उसी की डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने स्केल वर्टिकली पकड़ा होगा तो फिर वो स्केल कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, और अगर इसने स्केल को इस डायरेक्शन में पकड़ा होगा दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल, तो दैट मीन्स सिंस it is actually moving in horizontal direction, or one can say in this direction, since it is not moving in upward or in vertical direction, ठीक है, because I am here talking about in 2 dimensions. So अगर वो सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो I can say that सिर्फ इस डायरेक्शन में ही इसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी in the direction of motion, not in the other directions, ठीक है, यानी x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो x डायरेक्शन में ही लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, y डायरेक्शन में नहीं करेगी। The second essence of this theory, a set of individual clocks are synchronized relative to each other. For example, if in my frame of reference, अगर मैं कहता हूँ कि I have 3 such clocks, ठीक है, all these are synchronized. That means कि the 3 are actually ticking at the same rate, ठीक है, और फॉर योर कन्वीनियंस में ये बता सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें भी 1 बज रहा है और इसमें भी 1 बज रहा है और इसमें भी 1 बज रहा है, एंड देन दे आर राइट ऑफ टिकिंग आफ्टर 1 सेकेंड, दे आर एक्चुअली सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। सो व्हाट डज नेक्स्ट हैपन इफ समवन इज एक्चुअली मूविंग, दिस इज मी एट 0, बट समवन इज एक्चुअली मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज एक्चुअली कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, सो he would actually, this guy would actually disagree कि जो first clock है और जो second clock है और जो third clock है, all the set of clock is not actually synchronized. That means they are not ticking off at the same rate, ठीक है, यानी कि एक ने पहले टिक किया, एक ने बाद में, और एक ने मतलब मिड between. So फिर इसको हम देखेंगे कि why they would not synchronize. तो ये इसका बेसिकली इसकी एसेंस है, ये why it is so. The exploration of these fascinating ideas, especially in dynamics, will end up perhaps the most famous equation E is equals to mc square that we have already talked on, that E is equals to mc square, और इसका जो राइट एविडेंस है इन पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर है, हेड ऑन लार्ज हेड ऑन कोलाइडर्स के अंदर है, तो फिर उसको हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं शायद इसको लेने से भूल गया, एक पोएम मैंने लिखी थी कि सदियाँ बीत गई और ज़माना बीत गया, सदियाँ बीत गई और ज़माना बीत गया, तेरी राह तकते तकते अफगानी वॉर जीत गया। What does it mean? Why just I wrote this? Actually इस शेर का जो वो मतलब क्या कहते हैं, तशरीह में शायर फरमाना चाह रहे हैं कि सदियाँ बीत गई ज़माने बीत गया, दैट मीन्स इट्स एसेंस ऑफ प्योर स्पेशल रिलेटिविटी, ठीक है। सो कैसे सदियाँ बीत गई ज़माना बीत गया, दैट मीन्स कि आई एम एक्चुअली मूविंग इन टाइम एंड पासिंग बाय एंड बाय एंड बाय, आई एम एक्चुअली मूविंग इन टाइम, ठीक है, तेरी राह तकते तकते, ठीक है, दैट एंड्स विद आई एम लुकिंग आफ्टर यू अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, ठीक है, and you are actually moving such a slow mo, that means that your clock is actually ticking at slower rate, ठीक है, and so you are actually giving me a negligence, so इतनी slower rate से आप move कर रहे हैं, so you are actually giving me a negligence, मैं तुम्हें तकते तकते सदियाँ बीत गई, ठीक है, it's like that. So ये मैंने इसलिए रखा था कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ कि what is actually happening inside now स्पेशल रिलेटिविटी। तो स्पेशल रिलेटिविटी में अगर मैं आपको अब तक बता पाया हूँ तो एक्चुअली जो शख्स मूव कर रहा है relative to the speed of light, that means 0.5 of the speed of light, 0.6.9 of the speed of light, times of the speed of light, अगर वो इस हिसाब से मूव कर रहा है तो जो शख्स रेस्ट के अंदर है वो ये देखेगा कि उसकी जो क्लॉक है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी जो क्लॉक है, that would be ticking at very much slow rate, ठीक है। that means कि अगर एक रेस्ट में पर्सन है तो वो ये देखेगा कि भाई मुझे तो 2 मिनट गुजर गए और शायद इसको जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ही गुजरे हैं, ठीक है। सेम थिंग हैपन विद अदर, ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे कि दोनों का रेस्पेक्ट सेम कैसे हो सकता है। दैट मींस सेम थिंग हैपन विद अदर्स, दैट मींस कि अगर पहला वाला रेस्ट में है और वो क्लेम कर रहा है कि उसकी क्लॉक सही चल रही है, ठीक है, सो तो दूसरा वाला मूविंग रेफरेंस फ्रेम में है, ठीक है, वो भी ये क्लेम करेगा सेम। तो फिर इसको हम देखेंगे कि ये मिस्ट्री किस तरह सॉल्व होगी कि दोनों का क्लेम ही सही हो सकता है, ठीक है, या एक का क्लेम गलत होगा,
ठीक है, और किस रेस्पेक्ट में एक का क्लेम गलत होगा और एक का सही होगा, तो फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ऑल एसेंस अबाउट ऑफ दिस थ्योरी। अभी इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है इसके लिए। सो एक छोटा सा स्मॉल स्पार्क है, that is basically if there is such an unexpected nature of a reality that we have missed through our everyday experience, अगर इतना ही यानी इतनी अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ रियलिटी है कि एक बंदा जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है और दूसरा जो है वो साकित है, तो वो ये देख रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मास में कुछ वेरिएशन आ रहा है, मोमेंटम में कुछ चेंज आ रहा है, एनर्जी में कुछ चेंज आ रहा है। अगर इतना ही कुछ अनएक्सपेक्टेड है, दैट मीन्स कि उसकी क्लॉक जो है वो बहुत स्लो टिक कर रही है एज कम्पेयर टू द क्लॉक ऑन अ रेस्ट फ्रेम। तो अगर इतना ही कुछ अनयूजुअल है, सो व्हाई हैव वी मिस्ड इट और why aren't we aware of this special relativity right in our zone? यानी हमारे सेंसेस में क्यों नहीं है, हमारे इंट्यूशंस में क्यों नहीं है ये बात कि भाई अगर कोई बंदा मूव कर रहा है, यानी अगर मैं कहूँ कि भाई सर अगर मैं कहीं चलता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस वक्त क्लास में मौजूद हैं और मैं आपके पास चलता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, सो why won't you feel that कि आपका जो यानी आप जो है वो मेरा क्लॉक देखेंगे कि वो बहुत स्लोली टिक कर रहा है, व्हाई वोंट यू फील दैट, सिंस एक रेस्पेक्ट ये हो गया ना, तो मतलब मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहा, बहुत स्लो रेट से मूव कर रहा हूँ, बट कुछ इफेक्ट तो उसका आना चाहिए ना, मतलब कुछ तो ऐसा होता ना कि हमें पता होता कि हमारी लाइफ के अंदर स्पेशल रिलेटिविटी जैसी भी कोई चीज़ है, तो ऐसा क्यों नहीं है। चलें इसका आंसर देखते हैं। इफ यू लुक एट ह्यूज रेंज ऑफ स्केल्स ऑफ दिस यूनिवर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी, यानी अगर हम उन स्केल्स को उन स्पेक्ट्रम्स को देखें जो कि इस रियलिटी इस वर्ल्ड को डिजाइन कर रहा है, इस पूरे यूनिवर्स को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो वी ह्यूमन आर एक्चुअली सराउंडेड और हैव ओनली एक्सेस ऑफ वेरी टाइम पार्ट ऑफ दैट टोटलिटी, दैट टोटल यूनिवर्स, ठीक है। सो बहुत ही इस पूरी कायनात के अंदर बहुत ही इस पूरी कायनात के अंदर हम मतलब क्या है, मतलब we are nothing, we are not more than a grain of sand out of the billions grain of sand on the oceans of this earth. We are nothing, ठीक है। So next इसके अंदर देखते हैं, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। Let me zoom in so that we will have good idea. So we have here spectrum of the length. I am talking about the first spectrum. We have here the spectrum of the length. So in the spectrum of the length, we have here first atom. So atom that has a length 10 to the power minus 10. Obviously, we are talking about meters. And then again, we have some sort of viruses. So virus are 10 to the power minus 8. Some red blood cell 10 to the power minus 6. We have here single cell organism 10 to the power minus 4, and we even are here 2 meters around, and our earth 10 to the power 5, solar system 10 to the power 13, and galaxy 10 to the power 21, and the last one, observable universe. Look at the very extreme, very tiny to very extreme. You can say that both ends are extreme. So this is basically the huge variation in a length spectrum. So next we will have some sort of, यानी हमारे पास सिर्फ लेंथ के बहुत स्मॉल एक्सेस है, ठीक है। We are actually in the intermediate form. Next one देखते हैं mass. So another spectrum that we have in our hand is actually have again two such. So ये mass scale है, सबसे पहले वही आपके पास एटम आ जाएगा, तो एटम that is actually have mass in kgs 10 to the power minus 26, और फिर आपके पास viruses 10 to the power minus 20, red blood cell 10 to the power minus 15, and then single cell organism 10 to the power minus 8,
and if you are not fatty enough, or it would be 10 to the power 2. But if you are gym gym joiner, or one can say a bodybuilder, so it would be more than that. Okay, so 10 to the power to Earth, 10 to the power 24 kgs, 10 to the power solar system 30, 10 to the power 41, and the last one, observable universe, that is 10 to the power 52. So we would have, as you have seen कि हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम हो गए, एक तो लेंथ हो गया और एक मास स्पेक्ट्रम इन केजीज. सो इसके ऊपर भी आपके पास एक ह्यूज वैरायटी मौजूद है, एक तरह की ह्यूज वैरायटी आपके पास मौजूद है. और यू आर हियर एट इंटरमीडिएट इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, बहुत ही स्मॉल और बहुत ही लार्ज. Here we have some sort of third spectrum. So एक तीसरा स्पेक्ट्रम भी हमारे पास, that is basically the scale of speed. So अगर scale of speed की बात की जाए तो scale of speed is basically the growth of human hair is actually 10 to the power minus 9 meters per second. और अगर मैं इसमें बात करूँ तो 10 to the power minus 2 meters per second. It is actually the speed of the snail, minus 2 or 2 centimeters, something else, nearly per centimeter, 2 centimeters per second. Next is that human, we actually move or take one single strand about 1 meter. So I would write so we would take 1 meters per second in every seconds. And next is that space shuttle, that is actually moves 10 to the power 3 meters per second. That means 10 to the power 3 meters in every seconds. Typical speed of shuttle. And next we have some sort of light, that is actually the extreme, 10 to the power 8 meters per second. And next we have talked about all the spectrum. You can actually see that. So actually we humans are actually here at the mid of every spectrum. So क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर रिलेटिविटी इतनी ही अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैं यूनिवर्स में, तो पूरा ये हमारी बोन्स के अंदर मौजूद है. तो इसकी वजह ये है कि बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही स्मॉल एक्सेस है on each and every spectrum or on each and every scale. तो बहुत ही स्मॉल एक एक्सेस मौजूद है, यानी यहाँ पर बहुत ही स्मॉल एक्सेस मौजूद है, यहाँ पर बहुत स्मॉल एक्सेस मौजूद है, और इस स्पेक्ट्रम में बहुत स्मॉल मौजूद है. तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज अगर हम किसी एक स्ट्रीम के ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस स्ट्रीम पर जाते हैं, तो इस स्ट्रीम में हमें पता लगेगा कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के रिजीम में हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि साइज स्मॉल साइजेस को अगर हम फॉलो करते हैं, और अगर हम लार्ज मैसेस को फॉलो करते हैं, सो लार्ज मैसेस दैट मीन्स कि जनरल रिलेटिविटी में हम मौजूद हैं. ओके, और अगर हम इस एक्सट्रीम को देखते हैं, एक्सट्रीम ऑफ द स्पीड और स्पीड एक्सेस को अगर हम देखते हैं, तो स्पीड एक्सेस मैंने शायद लिखा नहीं, तो स्पीड एक्सेस को अगर हम देखते हैं, सो व्हाट वी हैव हियर स्पेशल रिलेटिविटी. सो अगर हमारे पास एक्सेस कुछ ज़्यादा होता फॉर आवर डेली लाइफ, सो हम अपने अंदर जो टोटलिटी है, ये जो इस यूनिवर्स की टोटलिटी है या जो कुलियात है इस पूरी यूनिवर्स की, उसको हम बेसिकली ज़्यादा देख पाते और हम आसानी से बाकायदा इस स्पेशल रिलेटिविटी के इफेक्ट को अपने अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो आपने देखा हमारे पास सिर्फ इतना स्मॉल सा एक्सेस है, ठीक है, बिटवीन द थ्री अमंग द थ्री स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं ओके some question answers. तो अभी तक हमने देखा कि बहुत हमारे लिमिटेड सेंस है that gives us small piece of totality.
ठीक है, यानी पूरे फुल्ली यूनिवर्स जो भी ऑब्जर्वेबल है उसकी हमें बहुत ही स्मॉल लिमिटेड सेंस दे रहे हैं वो हमें, बिकॉज ऑफ टाइनी फिनी एक्सेस टू all three scales. ठीक है, next we have some questions over here. We will look on that and I am trying to be answer on that. If you could routine travel near the speed of light, would all the special relativity be intuitive? यानी क्या हमारे लिए पॉसिबल भी होता, इंट्यूटिव हमारी इमेजिनेशन में लाना बहुत आसान होता, यानी ये थ्योरी उस तरीके से उतनी मुश्किल तरीके से डेवलप नहीं हुई होती और हमें अपनी इंट्यूशन में लाना बहुत आसान होता। यस इट इज आसान होता अगर हम रूटीनली ट्रेवल कर पाते स्पीड ऑफ लाइट से। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता था अगर हम रूटीनली, फॉर एग्जांपल अगर हमारी फ्लाइट्स स्पीड ऑफ लाइट पर होती हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को स्पीड ऑफ लाइट पर मूव कर देते, अगर हम ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने मूविंग और रेस्ट फ्रेम के अंदर चेक कर रहे होते, तो ऑब्वियसली फिर वो जो एसेंस है रिलेटिविटी का, that we have experienced all the day or all the nights or all in our life, so फिर obviously वो हमारी बोन्स के अंदर होती है और फिर हमें इस चीज़ को सीखने की जरूरत नहीं, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, आपको स्पेशल रिलेटिविटी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ही होता है हमेशा। सो बिकॉज वी आर नॉट ट्रेवल नियर द स्पीड ऑफ लाइट, सो फिर ऐसा कोई इंट्यूशन एज सच हमारी लाइफ के अंदर नहीं। विद टुडेज टेक्नोलॉजी how close to the speed of light can we travel? इसका बहुत आसान सा जवाब ये है कि एक्चुअली जैसे कि हमने अभी बात करी कि शटल्स जो कि एस्केप वेलोसिटी पे जाते हैं, दैट इज एक्चुअली रफली 1100 meters per second. That means in 1 second, if they would cover 1100 meters, only that way they can escape the earth region, or that is basically called the escape velocity. That means कि जो gravitation जो उसकी शकल है, जो शकल gravitation force जो है basically वो उसको overcome कर सकते हैं only when they are actually moving with this velocity. So अगर मैं इसको compare करूँ with the speed of light, so it is only about 2/3 or not 2/3, 2 of 10,000 of the speed of light. C is a symbol for speed of light. So 2/10,000. That means only a 2 part in 10,000. यानी इतना कम आप अंदाजा लगा सकते हैं। So अगर आप स्पेस शटल की बात करते हैं या किसी और मूविंग व्हीकल्स की बात करते हैं, so all they are actually moving with a smaller, nearly very smaller speed as compared to the light. Why can't we just push on an object to increase its speed to even beyond the speed of light? अच्छा, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। Why can't we just push an object? यानी हम एक ऑब्जेक्ट को पुश क्यों नहीं कर सकते इस तरीके से, so that we can increase it up in its velocity, यानी हम उसकी velocity बढ़ाते चले जाए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इमेजिन कर लेते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करते हैं, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करेंगे इट विल गेन सम सॉर्ट ऑफ मास इन इट। दैट मींस कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट स्पीड अप होता है, सो इट विल गेन सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम और एज वेल एज मास, तो उसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट मींस कि अगर उसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आप जो है उसको मजीद हार्डली पुश करेंगे टू चेंज इट्स वेलोसिटी, और हार्डली पुश करेंगे दैट मींस यू नीड to try it to be infinite push to move with the speed of light. So there is no such thing kind of infinite push. So infinite push नहीं होगा तो हम उसको उस increasing mass को speed of light पे भी नहीं पहुंचा सकते। So it's a kind of imaginative thing. So जब हम ये नहीं कर सकते, यानी infinite push नहीं लगा सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम speed up to the light speed हम नहीं कर सकते, या फिर उसके बियॉन्ड, तो बिल्कुल ही मुश्किल, बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है। Okay, suggest a reason why something can't be sped up to or beyond the light. But what about an object that always has speed greater than of light? Yes, there are some sort of object that is actually
have speed greater than speed of light. ठीक है, they are actually called tachyon. So tachyon are basically completely hypothetical objects. ठीक है, they are not real or true object. ठीक है, और because एलिमेंट्स जब तक नहीं मिले हैं ना उनके होने के या फिर उनके ना होने के, सो अगर जब भी वो मिलेंगे इस टाइप के कोई ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं, सो दे वुड बी नेम्ड एज टाइकियंस. और टाइकियन जो है वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव कर सकते हैं हाइपोथेटिकली. सो अगर हाइपोथेटिकली वो मूव कर सकते हैं, सो स्पीड ऑफ लाइट इज सम सॉर्ट ऑफ बैरियर. सो अगर हम इसको देखें कि स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली एक तरह का एक बैरियर. ठीक है, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट. सो अगर जो समथिंग जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव कर रही है तेजी से, ठीक है, दैट वुड नॉट बी स्लो डाउन एंड कम टू द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, बिकॉज़ इट्स अ बैरियर. एंड और कोई अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट से कम मूव कर रहे हैं, दैट इज इन योर डेली रूटीन लाइफ, ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर मैं इनको ट्राई करूँ स्पीड अप करने की, सो दे वुड नॉट overcome this barrier, यानी वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं जा सकते. तो दैट मीन्स कि we would not, or it is hard to be experience such particles that is actually other side of the barrier. यानी इस साइड वाले पार्टिकल्स को हम अपनी डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अगर वो एग्जिस्ट भी करते हैं. ठीक है, बिकॉज हम इस स्पीड को अप्रोच नहीं कर सकते, तो फिर हम इसके एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. इट्स काइंड ऑफ इज पॉसिबल, मतलब कुछ और तरीके से शायद हम उसको पॉसिबल कर सकें. और सिमिलरली वो पार्टिकल वो जो उस स्पेस के अंदर मौजूद है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप है, वो इतने स्लोअर पार्टिकल्स को कभी भी, दैट इज एक्चुअली इन आवर रूटीन लाइफ, ठीक है, उन पार्टिकल्स को वो कभी भी कैप्चर या कभी भी उनकी स्पीड नहीं ले सकते. ठीक है, दैट मीन्स कि वो स्पीड ऑफ लाइट से कभी भी स्लोअर नहीं हो सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. ठीक है, लास्ट थिंग इज दैट कि सो स्पेशल रिलेटिविटी में हम बेसिकली उन फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे दैट वी हैव ऑलरेडी लुक्ड इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, इग्नोरिंग सम सॉर्ट ऑफ हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सो हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो कि बैरियर के बियॉन्ड है. ठीक है, दैट कैन नॉट बी मूव और टेक अप द स्पीड ऑफ लाइट. should note that although many of the results derived in this course may run counter to your intuitions, यानी opposite to your intuitions, आपके intuitions के imagination के बिल्कुल opposite जाएंगे कि यार ऐसा भी possible है, ऐसा मुमकिन भी है. तो इसका मतलब ये कि आपकी intuitions को, अपनी imaginations को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से build up करना है. यानी आपको थोड़ा सा काम रहना है, थोड़ा सा सुकून में रहना है इस कोर्स के दरमियान. ठीक है, तो थ्योरी is a solid agreement with experimental observation. That means कि थ्योरी यहाँ पर गलत नहीं है. ठीक है, आपकी इंट्यूशंस में वो बात आपके दिमाग में वो बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठ रही है, बिकॉज क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आपको बहुत ही स्मॉल एक्सेस है ओवर दीज 3 स्पेक्ट्रम्स. तो बिकॉज ऑफ दैट थ्योरी इज नॉट इन योर बोन. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्चुअली काउंटर to your intuitions. That means always opposite to your intuitions. ठीक है, आपकी intuitions की बिल्कुल opposite है. So and yet we called a theory would have experimental evidence. That means कि particle accelerators. ठीक है. So अगर particle accelerators को हम देखें तो फिर उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि this theory would have some sort of experimental evidence in which the particles actually moves respect to the speed of light. So उसके अंदर फिर हम इन चीज़ों को होता हुआ देखते हैं एक्चुअली. ठीक है, यानी जो स्पेशल रिलेटिविटी इफेक्ट्स हैं उनको फिर होता हुआ देखते हैं हम. ठीक है, सो वो रिलेटिव फ्रेम और रेफरेंस फ्रेम के अंदर टाइम को स्लो मूव में कंप्लीट होता हुआ देखते हैं, और एज वेल एज लेंथ को श्रिंक होता हुआ देखते हैं, और जो साइमल्टेनिटी है उसको चेंज होता हुआ देखते हैं. या फिर डायनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मोमेंटम, एनर्जी और इन कन्वर्जन्स को हम होता हुआ देखते हैं इन थ्रू द relativistic effect inside in a particle accelerator. So that's all the things that we have talked on. So इंशाल्लाह थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन कुछ लेंदी होगा. So इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिर हम उसके इनिशियल रेफरेंस फ्रेम के ऊपर बात करेंगे.